नमस्कार। मैं वैद्य मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार मनस्विनी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के इस 9वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही अष्टमी का पूजन हुआ है और कल दशहरा है। आप सभी को उसकी भी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम सभी ने वुमेन्स हेल्थ केयर की सीरीज के बारे में हम जान रहे हैं। स्त्री जीवन के हर एक फेज के बारे में, उसके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर कैसे बदलाव आते हैं और उन सभी में इसका साथ कैसे देना है, ये हमने देखा। ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी महिलाएं, और जो इन महिलाओं की केयर करता है वो सभी, इन सभी को इस वीडियो से फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे तो ये नेचर हमें कैसे हेल्प करेगा, राइट? तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि ये सभी इस शक्ति के तत्व को नमन करते हैं। इसीलिए आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। आज का जो हमारा विषय है, अभी आप सोच रहे होंगे कि कल तो पोस्ट मेनोपॉजल फेज भी हो गया, अभी कौन सा फेज लाने वाले हैं? तो कई लोग मजाक में बोलते हैं ना, ये तो जिंदगी के बाद भी नहीं छोड़ने वाली है। तो आई डोंट नो अभी किस फेज के बारे में बात करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो राइड है ये वुमेन के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन कब से? तो फ्रॉम द बर्थ टू इन्फिनिटी। अभी ये विषय जो है ये हमारे साथ डिस्कस करने वाली हमारी तज्ञ जो है वो हमारे साथ में है, मिसेस रजनी कदम मैम। वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो रजनी कदम मैम और हमारा साथ काफी पुराना है। आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार के इस प्लेटफॉर्म पर आपने उनके बारे में कई बार सुना है, उनको देखा है आपने, और उनका मार्गदर्शन भी लिया हुआ है। रजनी कदम मैम बैंगलोर में हैं और वो काउंसलर है, और रजनी मैम एक साइकोलॉजिस्ट भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रजनी मैम से हम कई बार पेरेंटिंग इस विषय पर सुन चुके हैं, लेकिन आज जो है वो हमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की, यानी कि हमारे माइंड के बारे में बताने वाली हैं। हर कोई बोलता है कि वुमेन के मन में क्या है वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आज एक वुमेन ही ये मिस्ट्री खोलने वाली है कि इन कैसे कैसे बदलाव से वो आगे जा रही हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रजनी मैम को कि उनके सेशन को शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले जो हमने ये 9 दिनों में राइड ली है उसके बारे में एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये कविता सुनने के बाद में आप, और रजनी मैम का सेशन सुनने के बाद में आप खुद की केयर करने से रोक नहीं सकते और खुद से प्यार करने के लिए भी रोक नहीं सकते। सो एक राइड हमारे डे 1 से डे 9 तक इस कविता के माध्यम से। बिटिया रानी जिंदगी बड़ी सुहानी है, कुछ पलों की ये जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी है। हर पड़ाव अलग ये जिंदगी की कहानी है। बिटिया रानी जिंदगी बड़ी सुहानी है। आयुर्मंगलम आपके लिए खड़ा है अगर तुम्हें कुछ परेशानी है। माँ बाप आपके दोस्त है सबसे करीब, वही आपके विश्वास की निशानी है। फिर भी अगर परेशानी है तो आयुर्मंगलम आपके लिए खड़ा है। जियो हर पल खुशियों की ये खानी है, जियो हर पल खुशियों की ये खानी है। जिंदगी की चुनौती जीतकर आपकी शक्ति की पहचान इस दुनिया को आपको करानी है। बिटिया रानी जिंदगी बड़ी सुहानी है। बिटिया रानी अब सयानी बन जाती है, घर से विदा होकर अपने महल की रानी बन जाती है। बिटिया रानी अब सयानी बन जाती है, घर से विदा होकर अपने महल की रानी बन जाती है। फिर समझ गई ये राह भी चुनौती से बनी है, फिर समझ गई ये राह भी चुनौती से बनी है। चल लड़ तू अब, तू तो मेरी झांसी की रानी है। रानी तू बड़ी सुहानी है। जिंदगी में निभाते हुए रिश्तों से हंसते हंसते ये हमें गुजारनी है।
हंसते हंसते हमें ये गुजारनी है, भूलिए मत हम अपने संस्कारों की निशानी है, हम अपने संस्कारों की निशानी है। आयुर्मंगलम साथ है जो, आयुर्मंगलम साथ है जो, तो सबसे सुंदर आपकी जिंदगानी है, सबसे सुंदर आपकी जिंदगानी है। माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद जो है वो जिंदगी जीना सिखाती है। सभी वैद्यक शास्त्र आपके जीवन की सुरक्षा करने के लिए है, बट ये आपको सही राह दिखाते हुए जिंदगी का आनंद लेना सिखाती है। इसीलिए आयुर्वेद और योग के सहयोग से अपना जीवन बिताइए। और आज रजनी मैम के साथ में जो हम राइड ले रहे हैं, हमारे बर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक, जन्म से लेकर अंत तक, उसे भी समझिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ पाएंगे। क्या बात है, शायरी बनना था। शायर मिला, बना दिया। Nice. Very nice. Thank you so much. Yeah. I'll just share my screen. Nothing much. But then let's do this. Okay. Is this okay? Not yet. Not it. How about it now? We can't see your screen. I'll share it all over again. Okay. रजनी मैम हमेशा कहती हैं कि जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए, बॉडी, माइंड एंड सोल। ये तीनों भी अगर बैलेंस्ड है तो हम हैप्पी रह सकते हैं। Correct. We all are aware about the psychophysiological effect, माइंड का बॉडी पर और बॉडी का माइंड पर इफेक्ट होता है, इसीलिए हमें माइंड की केयर करना बहुत जरूरी है। Very true, and I'm really happy that I am part of this journey. Well, what I would like to start with saying that I'm welcoming all these bold, these fierce, these strong women of not only Manaswinee, of all the platforms that are viewing us today. Here's a hearty welcome to these bold, these strong women, to this last segments of our series of talks on women health, from birth to infinity. Now, हमें पता है नवरात्रि is a 9-day festival, and it's a long event, and it's at certain places नवरात्रि को देवी के reflections में, देवी के पूज्य में this 9 days is followed. So it is a festival of reflections and fasting, and at some place नवरात्रि is for dancing and feasting. जो भी हो, जिस तरीके से भी हम अभी नवरात्रि मनाते हैं, what we need to understand is these 9 days are dedicated to this divine principle. ये जो दिव्य शक्ति जो हम बात करते हैं, these 9 days talk about these divine principles. Hence this thoughtful initiative by Manaswinee Foundation and Dr. Mohini Kulkarni to come up with something that talks about women from the day they are born until their infinity, the changes that they go through, the developments that happens in their lives, the physical, the social, the economical, the entire holistic development of a woman from zero to infinity. So you have an entire content, entire data about women to understand the physical changes, their developments, and gradually you understand how all these changes over a period of time will make you successful, and how you are going to thrive as women through all these changes that you progress in life. So these 9 days are about the various transformations of Ma Durga. हमें पता है कि हर रोज there is one form of goddess Durga. So, and this strikes a note in our lives because we as women take on many roles.
So it is like daughters, you're talking to sisters, talking to wives, you're talking about mothers, you're talking about caregivers, talking about employees. All of these, like Ma Durga with various forms, then we are talking about the same divine principle जिसके बारे में हम बात करते हैं. So we're talking about women in all forms, as I said, daughters, sisters, wives, mothers, caregivers, and employees. So with so many roles comes so many responsibilities, and with so many responsibilities comes so many expectations. So in an Indian context, a woman's health is linked to the status that she gets in the society. Now, जिस सोसाइटी में है, जिस कल्चर में हम बिलोंग करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा स्टेटस कितना वैल्यूएबल होता है. Fortunately, unfortunately. So it depends on the family that nurtures you. It depends on the family that respects you, that encourages you, that motivates you. It depends on the family that believes in you and work towards the empowerment of their girl child. So देखो, just because in a patriarchal society like India, like ours, where we are dependent on, a woman's status is dependent on family and the social cultural context, then it mainly depends on how the people celebrate women. So in a situation like this, what are some of the possible conditions that I can see that can derail the development of a little girl child is जिस घर में गरीबी हो, जिस घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जिस घर में इलिटरेसी हो, एजुकेशन प्रोविजन नहीं हो सकता है, जिस घर में वायलेंस देखा हो ज्यादा, जिस घर में अब्यूज और ट्रॉमा ज्यादा तक होता रहता है, then इस कंडीशन में what you see is a girl child who's affected by all these risk factors, or a girl child who is emotionally disturbed, and a girl child जिसकी उन्नति हम unfortunately आगे नहीं देख पाते. So in a house, so in a society, in a family, when a child is born, you celebrate the birth of a child, you celebrate the arrival of a girl child, और उस गर्ल चाइल्ड को हम इतने उसको मोटिवेट करें, encourage करें about her decisions, her choices, her life, celebrate every moments in her life, every accomplishments in her life, and also ensure that tell her that she is a very big part of a society where she has to progress and achieve. So जब हम अपने बच्चों को, okay, so we include all children, and now just because हमारा ये discussion is more about girl child, so when you're talking more about a girl child, the more you make her feel that she is most important and then her contribution is very valuable, then such children thrive and prosper. So the most of the research work that they have done, there was a survey, recent survey, which talks about some of the main issues for a growing adolescent girl. तो एक कोई girl अपना adolescence में जाती है, तो ज़्यादातर problems उनको क्या दिख के आया is when there was a excessive pressure to be best, कि हमें एक तरीके से दिखना है. There is this, as I said, there's more of image issues. So there's a lot of self-image issues. You have to look a certain way, you have to behave in a certain way. Then there is peer pressure, then there is bullying, then there is a trauma, body shaming. All of these affect a growing girl child. Not only this, even when the child feels that ये survey जो अभी मैं जो कह रही हूँ, this survey also talks about जिस घर में financially safe नहीं है, जो घर secure नहीं है, financial background उनका अच्छा नहीं है, तो ये ज़्यादा trigger points होता है कई adolescent बच्चों को. Trigger points यही है कि इनका emotional disturbances होता है, इनका and usually in our conversations I've always mentioned that emotional disturbances usually around this time
irreversible hota hai, and this affects the development, the physical, the mental, the social, the emotional, the environmental factors that affects in the progress of a girl child. So what I'm trying to convey here is, from the day your child is born, from the day your girl child is born, aap agar unke, if you're proud of your child, if you're happy, if you're contributing in your child's achievement, if you're encouraging your girl child, that in helping her in her choices, respecting and valuing her contributions in the life, then this helps a lot in her development, in her progress in her life. Some of the researches which I have put across, जो research का latest survey जो हुआ है, जो पूछता है कि अगर एक adolescent girl child को अगर कोई trigger points है तो क्या करके दिख के आता है, तो यूजुअली ये सम ऑफ द पॉइंट्स होता है जहाँ एक्सपेक्टेशंस बड़ा हाई होता है कि तुमने ये डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, या तुमने ये करना है, तुमने पढ़ना है, तुमने ये ऐसा करना है, या तुमने ऐसा दिखना है, तुम्हारा सो इट्स मोर ऑफ बॉडी शेमिंग, तुमने यू हैव टू लुक लाइक अ सर्टेन वे, so then bullying, insecure financial background. Further, when we have career choices, अपना career choices वो अगर नहीं चुन पाते हैं, demands from all the sides of her life, inability to question, जब उनको choices करना उनको मिलता नहीं है, जब वो they are unable to question the choices that are made for them, gender stereotypes है, जहाँ इन discrimination होता है male and female genders के issues में ले आता है, when इनके हाथ में कोई power ही नहीं होता है खुद का decisions लेने का. These are some of the places where it affects the development, the growth of individual, any individual, and खास करके when we're talking about a girl child, जिसका हमने as I'm telling you, the family helps her to decide. So it's either a family makes or breaks the development or the progress of a girl child in our family. Even a latest research talks about girls getting married very early. बहुत जल्दी शादी होती है. Early marriage is another a problem which is affects the entire economy of our country. So if you notice, India is home to the largest number of child brides. 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों की शादी हो जाती है. So when you get a child girl, when she's just even not even mature, she's just attend minar and इनकी शादियां हो जाती है. तो what are you achieving? There is an arranged marriage, there's a forceful marriage, and then they all get pregnant very early. So an early pregnancy, early marriage, sexual coercion, जहाँ sexual coercion का मतलब वो है कि शादी में ही रेप होता है. और हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है कि हमारे घरों में हम मेल चाइल्ड का बहुत इम्पोर्टेंस मानते हैं. लड़का हो, जब लड़का नहीं हुआ तो बार बार को मल्टीपल प्रेगनेंसीज होता है, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है. अगर कई जगह में फीमेल बच्चों की एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो फीमेल फेटिसाइड होता है. Then there is a lot of poor support from in-laws, क्योंकि in-laws का expectations अलग होता है, हमारे चाहते अलग होती हैं. Then multiple pregnancies, birth complications. So now you can imagine the health of the little girl who's just about 14 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल की लड़कियों को जल्दी शादी किया जाता है. बार बार इनको बस बच्चे पैदा करने के जो इनको what do you say, you call them like a child procreating machine, and there is very poor support from their in-laws. Such conditions derail the development, the progress of a girl. So when we're talking about little child,
जब बच्चे जब छोटे होते हैं उनका कैसा होता है, when you have a very happy family, safe family, बच्चा सेफ फील करता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझे, मैं हूँ, मेरा भाई है, हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, there is no discrimination, हम दोनों को एजुकेशन एक जैसा मिलता है, then the child is thriving, she's doing very well, she's emotionally and physically in a very good place. She's studying, she's doing, she's achieving, she wants to do, she's progressing, she has dreams, she has careers, goals in her life. Similarly, as we notice, some of the problems that come in a child's life is, as I said, peer issues hota hai, body image issues hota hai, bullying issues hote hain. And then family support jab hota hai, when they get the daughters married very early, so it can be early marriage. So if it is early marriage, then at places there are multiple pregnancies, क्योंकि हमें लड़कों की बहुत शौक है लड़के पैदा करने की, तो we'll have multiple pregnancies, birth complications के साथ उनका health भी खराब हो जाता है. And then अगर लड़कियां पैदा होते हैं तो उनकी female feticides हो जाता है. Then अगर वो unemployed है तो घर में वो 24/7 they are undervalued. So उनका respect भी उनका, it depends on how that family, the support of the in-laws all make her feel. So they feel undervalued, or they are feeling, if they are working somewhere, then they are feeling underpaid. And at places where they are unemployed, तो फिर unemployed है तो उनका full use किया जाता है. This happens on an average Indian family. As I say, we are speaking on a platform where we are all in a very good place, so we don't get to see. But when you're looking at a very larger perspective, in a bigger picture, these are some of these risk factors that a woman faces in every stages of their life. So if you are working, then you have to balance home and work. We've made progress. Things are changing. There are a lot of dynamics that have changed. We have a lot of places. As women, हम बहुत जगह पे चले गए हैं, हम बहुत progress हो गए हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं. But चांद तक पहुंचने के बाद भी घर आने के बाद घर को हमने संभालना है, बच्चों को हमने संभालना होता है. So it's like you are working between the home, the hearth, and your office setup, along with your child care. Child care का responsibility भी as women हम पर बहुत ज़्यादा आता है. And हमें ही ज़्यादा जिम्मेवार ठहराया जाता है in child care. So this is another big responsibility. घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्गों का look after करना, उनका responsibility भी हम पे आता है. So there are some women who want to progress in life, or who want to move in life, who want to do something in life. It doesn't have to be that you have to be educated ही होना चाहिए. Some homemaker who wants to establish something, but अगर these are some of the risk factors that you face in life during your later 20s, 15 to 20 to 30 age के बीच में. These are some of the issues that as women we all go through. So this is one of the rights that, as Dr. Mohini mentioned, this is one of the challenging rights that we go through. So with early marriage, or with multiple pregnancies, and with poor support from in-laws, I'm only talking about a very extreme case. We are also working women, we are in a healthy place. So as I said, we need to look at a bigger perspective and see this is how an average middle class family looks like. So if you have a supporting family, you have a supporting in-laws, they know the value of their daughters, the daughter-in-laws, they know what she brings home, then you are in a very good place. But when you look at these kinds of points, which I'm put out, then these are some of the social factors or some of the risk factors that affects the quality of a woman's life. So when you're facing these kinds of problems, then what kind of mental health issues do you see? So what I see is eating disorders. Eating disorders, it's something called anorexia and bulimia. Women account for at least 85% of anorexia and bulimia cases, and 65% of binge eating disorders are seen in women. Now, suicide attempts.
suicide attempts, बहुत सारे men die out of suicide, but the rate of women who attempt suicides is much more than men. So women attempt suicides many number of times in their lives. See, suicide is the India's leading cause of death among women, and this age is between 15 to 29. Suicide is the leading cause of death. फिर आता है post traumatic stress disorder, which we call PTSD. And PTSD, ये तो stress का level ही हमारा अलग है. तो when women are affected by PTSD, there are twice the number of men who are affected by PTSD following a very traumatic incident. Then anxiety disorders, depression disorders, even depression. If there are about 40% of men who are going through depression, then there will be 80% of women who will be going through depression. This is the rate of depression which is happening in our country. Then we talk about perinatal mental health. Perinatal mental health is all about the mental health of a woman before childbirth and after childbirth. So perinatal mental health is a very important factor because yahan mental health is involves the mother and the baby. So agar mother is not in a good emotional place, then she cannot connect well with her child, and then yahan ek nahi do life ka emotional health ka problem ho sakta hai. Then with that comes menopausal. Now menopausal problems, everybody, all women go through this menopause, and experience of menopause is a very difficult experience by itself. So they have many difficulties. They have, in addition to their period stopping, getting used to the changes, the body changes, the hot flushes. When they go through all of that, uske saath they have to accept aging with grace. Accepting and menopausal is a time when you're around 40s, between your 40s to 50. So that is the time there are very high chances that there might be loss of your partner. Koi na koi would have lost their spouse. So other age-related issues हो सकता है, and आप अकेला and lonely feel कर सकते हैं. So during menopause, there are high chances of women going through again depression and anxiety because suddenly future बड़ा bleak लगता है, घर खाली हो जाता है, घर में बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं. Unfortunately, one of the partner का death हो जाता है, तो फिर उनको अकेले रहना पड़ता है. The loneliness eats them, and the depression and anxiety and other neuro problems like Alzheimer's, dementia, all are creeping around this point of time. Further, now when we're talking about mental health, the face of mental health is completely changed after coronavirus pandemic. So coronavirus pandemic के साथ जो वायरस ने जो काम किया वो अलग बात है, उसके साथ जो इफेक्ट हुए हैं, a lot of cases of domestic violence, a lot of cases of relationship issues. We've seen a lot of divorce cases happening after post the coronavirus pandemic. Then there has been job loss, illness, deaths, medical expenses, because job nahi hai to medical expenses hai, wife beating. I mean, aap bolo, there are a lot of issues that have happened because of the pandemic that has happened. So in general, I'm just putting it in a box and telling you this, some of the disorders that women go through all their lives, and specifically eating disorder, because eating disorder is because we all need to look at a certain way, smile a certain way, we are so media crazy. So eating disorders is a very prevalent issue amongst women. So anorexia and bulimia and binge eating. Then I talk about suicide attempts, PTSD, anxiety, depression, perinatal mental health. All of these are most importantly affecting women from, as I said, from age 15 to infinity until we are alive. So
what we need to understand is, देखो stress, everybody takes stress. आपको भी stress होता है, हमको भी stress होता है, or the way we react to stress, the way men face stress, all of us have face stress in our own ways, but psychologically and biologically there are marked differences in men and women. So women and men are not only different in physical attributes, but in their psychological makeup. हमारा brain कैसे wired है, हम कैसे situation को react करते हैं, हम कैसे communicate करते हैं, हम relation के साथ कैसे deal करते हैं, हम अपने feelings को कैसे express करते हैं, and all of this affects how we respond and react to stress. So as women, we have a higher mean level of internalizing our problems. तो हम जो भी है हम बहुत internalize कर देते हैं हमारे stress को. हम हर बार as women हम बहुत guilty होते हैं. There is a guilt emotion as women that we carry, and it's a very heavy emotion that we carry all throughout our life. So guilt is a very common emotion in all these problems that we face through. So stress का level अलग है, stress कैसे हम लेते हैं as compared to when men, stress का conditions कैसा है, कैसे respond करते हैं हम stress को, वो भी अलग है. तो obviously हम internalize जब करते हैं, सब अपने पे लेते हैं, हमारे वजह से होता है करके हम लेते हैं. This is the main problem that women go through. We feel that all problems is because created because of us, by us. When there is a stress condition like that, and when a woman goes through mental health issues, the problem is वो उनको दिख के नहीं आता. They won't realize that they have a problem. फिजिकल प्रॉब्लम हो तभी हम डॉक्टर के पास बहुत कम बार जाते हैं. अरे आज नहीं, कल, अरे कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा. सो व्हेन देयर इज अ फिजिकल प्रॉब्लम, हम डॉक्टर के पास वैसे ही कम जाते हैं, हम वैसे घर पे जो दवाइयां वो खा लेते हैं. तो नाउ यू इमेजिन व्हेन देयर इज अ मेंटल इशू, इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल गो एंड देन फाइंड टाइम एंड सिट एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट एंड से कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी. आई डोंट थिंक 75% of the women think that they should go and talk to somebody and take help. So usually अगर problems होता है तो बहुत poor attendance होता है hospital settings पे, और ये women अपने husbands के साथ लेके नहीं आते sadly, but they usually come with their parents. Parents लेके आते हैं उनको, husbands already उनको disown कर देते हैं क्योंकि ये पागल हो गई हैं करके. तो हस्बैंड अपने पेरेंट्स के, अपने भाई या बहन के साथ ये विमेंस आते हैं अगर ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, बट फॉलो अप ठीक से नहीं होता तो इनका अटेंडेंस पुअर होता है टू दिस मेडिकल सेटअप्स, इन दिस मेंटल हेल्थ सेटअप्स. अगेन इनके प्रॉब्लम्स भी आपको अगर समझ में आता है तो यूजुअली आप यू माइट से कि बॉडी एक्स बहुत हो रहा है, लो मूड हो रहा है, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप, आज मुझे काम करने को मन नहीं कर रहा है, या somebody बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई है, रिलीजियस में अपना पूरा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो गई है. There's a change in how your behavior, and suddenly you become more involved in superstitious beliefs or those super क्या जो बोलते हैं tantras or all of that. So you know you have a problem, you know you're going through a problem, but as I said, as women we tend to go less towards doctors. So going towards a mental health specialist and talking about your problems या जाके दवाई भी लेना, follow up करना, ये सब बहुत मुश्किल होता है. तो इनका कंडीशंस और खराब होता जाता है. आप इनको बेशक मंदिर में जाके इनको बोल सकते हो कि इसको भूत चढ़ा है तो ये भूत उतार दो, बट आप क्लिनिक में ले जाके इनको कोई दवाई नहीं देंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते. तो दिस इज यूजुअली द स्टिग्मा बिहाइंड मेंटल हेल्थ. सो आपका आउटलेट क्या हो सकता है? somebody कोई रिलीजियस में ज्यादा हो जाते हैं या कोई ज्यादा इमोशनल आउटलेट्स यूज करते हैं बहुत, या अगर supposedly somebody is going through a lot of depression, like if you see men who go through depression, वो ज्यादा स्पोर्ट्स में हो जाते हैं, एक्सटर्नलाइज करते हैं वो, so they do a lot of sports activities, घर से बाहर जाते हैं, अपना हॉबीज ढूंढते हैं, ट्रिप्स चले जाते हैं, they do all of these things. So
this is how stress looks in women, and this is how we don't understand when there is a problem in a woman. See, what we need to understand is डिस्कशन सिर्फ वुमेन हेल्थ का अगर हम बात करते हैं तो हम उनके इमोशनल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ सब कुछ लेके ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ अगर पॉलिसीज भी बनना है, अगर डिस्कशंस भी हमने करना है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अ फिजिकल हेल्थ, वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल दीज अदर एरियाज ऑफ अ लाइफ. So only discussions of a woman on one area doesn't add value. हमें ये करना है कि as women, and you as women who are watching us also should be more aware of how mental health affects, how both mental and physical health of a woman is very important. अगर मैं खुश नहीं हूँ, आज मुझे मूड नहीं है, तो मैं सुबह उठ के मैं क्या काम करूंगी? सुबह उठ के मैं बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगी, या मुझे अपना ऑफिस कैसे जाना है, या मुझे अपना पेशेंट्स को कैसे बात करना है? So from all aspective, I feel like if you are feeling good from inside, then you will want to do good from the outside. So whenever we are talking about women's health, women's discussion, our discussion should be about the physical growth, the mental growth, the emotional growth, the social support that the women is enjoying in a society. Now this is one picture जो मुझे बहुत ये करता है कि जहाँ you see a woman with 10 hands, and this is a very famous picture which talks about multitasking woman. Multitasking woman है तो बहुत अच्छी है, she's very smart, she's intelligent, she can run the house all by herself. All by herself मतलब कितना बड़ा भारी लगता है भाई, मैं ये भी काम कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मुझे कोई किसी की सपोर्ट नहीं है. आई कैन मैनेज अलोन. इधर ना इस चित्र में ना मेरा हस्बैंड है साथ में, ना घर वाले साथ है, कोई नहीं है, और मैं अकेली बच्चे को भी संभाल सकती हूँ, मैं ऑफिस को भी संभाल सकती हूँ, मैं सब्जी भी ला सकती हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ. नाउ लेट्स प्लीज कट दैट नोशन. You can multitask, good, if you can do very well, but very genuinely this is a little difficult. Somebody who wants to look like, I mean, हमें क्या करता है, सोसाइटी ग्लोरीफाई कर देता है कि ये देवी है, ये सब कुछ कर सकती है, ये सैक्रिफिशियल है, ये ऑल गिविंग है, ये ऑल सैक्रिफाइसिंग है, ये सब काम अपने आप कर सकती है. जब आप वहां हमें बिठा देते हो, हमें ग्लोरीफाई कर देते हो और हमें अकेला छोड़ देते हो, तो हमें लगता है कि भैया मुझे ये करना ही है, बिकॉज मुझे एक लेवल दिया है, एक दर्जा दिया है सोसाइटी, एंड हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू द सोसाइटीज circumstances. Well, that's not true. You are a multitasking woman, you can multitask, and you should, but you can't do all of this alone. You have to take support of your family, you have to take support of your colleagues, you have to take support of your friends. You have to have a very vibrant, very very strong and a thick social network that will help you to go forward. With a big network like this, you will be able to move forward more confidently and more positively. So when we are talking about, so ये जो माँ दुर्गा का जो ये various forms की बात हम कर रहे हैं, this is about talking about empowering women, saying that, oh, you are like goddess Durga and you have various forms. There are a lot of powers to you. Yes, there is a lot of powers to me. There is, I can be kind, I can be humble, I can be fierce, I can be fearless, I can be passionate, I can be disciplined, I can be realistic, I can be unruly, all of these. So when you take this essence of this festival, I say that take this Divya Shakti, this divine principle of various forms of Goddess Durga, but various powers in you, various qualities in you that you can cherish, that you can, ये जो qualities है आपका strength होना चाहिए, and ये जो power है आपका, you have to take this forward. So you are not alone in this journey. You can't do this alone by yourself. You need to have a beautiful network that encourages you, that guides you, and makes you emotionally strong.
So saying, I come to the end of our discussion about mental health and how mental health looks like for a woman in all her stages of life. There's so much to talk about mental health about women, so but then we can't do too much. Thank you so much. Thank you so much, Rajni ma'am, for such a wonderful journey through her mind, right from birth to infinity, as you said. Yes, she is multitasking. She has powers, but she need your love and support. Once she got your love and support, she can do anything, anything for herself and anything for you. But once she got hurt, or once she got, then it can be a zero for her. So, my dear friends, nature is like that. No positive and negative forces. It requires to create and current. So, similarly, if life want to go on, move on happily, smoothly, then we all need to be support each other. These 9 days were very nice to be with you all. And lastly, Rajni ma'am's journey through her life was the, हम बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा. So thank you so much, ma'am. Like, या पूरे सेशंस का सार जो है वो ही है इसमें, साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट. वन मोर टाइम आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल, मन का शरीर पर और शरीर का मन पर प्रभाव होता है. और इसीलिए डिसीजेस से भागने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं है. डिसीजेस से भागने के लिए हमें नियोजन की जरूरत है. हमारे जीवन का नियोजन अभी भी समय नहीं गया है. आप चाहे कौन से भी फेज में हो, आपकी बेटी, माँ, बहन, दोस्त, इनमें से कोई भी फेज में हो, फ्रॉम बर्थ to infinity. So please share these videos to your near and dear ones, whoever with you all, जिन्हें भी आप प्यार करते हैं उनके साथ में, क्योंकि यही मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट होगा इस दशहरे का. So thank you so much for being with us. Thank you so much, and I did have a good time. All the best.